एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस। सो हमारे यही सिंगल रो फंक्शंस में ये थर्ड कैटेगरी है जो हमने पहले कर दी है, न्यूमेरिकल फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस। नाउ थर्ड इज डेट टाइम फंक्शन। जिसको भी न्यूमेरिकल या स्ट्रिंग फंक्शंस देखना है यू कैन चेक आवर चैनल एंड आप उसी में स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिकल फंक्शंस को देख सकते हो। So let's move to the data type function. तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्ट डेट। डेट इज द फंक्शन, इसमें हमारे को सिंपली डेट डिस्प्ले होगी एज इट इज, जो भी आप डेट डालोगे। लेट्स से 23, पहले हमारे पास आएगा ईयर, जैसे 2006 हाइफन मार्च, यानी मंथ, देन डेट, एंड ऑफ टाइम। सिंपल। इसका जो फॉर्मेट होगा पहले होगा ईयर का, मंथ का एंड डेट का। अब डेट आ गई आपके पास। अगर आपको इसमें चाहिए डे, तो इसमें डे कौन सा है? डे इज सेकेंड, राइट? अब नाउ you need the month। थर्ड मंथ। बट अभी ये तो हमारा डेट से आ रहा है, तो डिफरेंस क्या आएगा आपको, जो पेपर में भी कंफ्यूजन होती है, इट्स मंथ नेम। अगर आपको चाहिए कि ये मार्च डिस्प्ले हो तो यू शुड राइट मंथ नेम ऑल्सो। तो आफ्टर मंथ नेम, लेट्स से अगर मुझे चाहिए कोई डे, कि उस दिन कौन सा दिन, तो विल राइट डे नेम फॉर दैट। Then we have day of week, तो उस वीक में कौन सा डे था? फिफ्थ डे ऑफ द वीक। So next we have year, so it will simply display year. Most important, ये जो बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, that is the now function that will display your current date and time, and the another one is sys date, system date and time। ठीक है? So that's all for date and time function। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो, you can write down in chat box and we'll get back to you। Thank you।